Assalamualaikum. How are you all? Hope you all are fine. Class 1, I welcome you all for your lecture number 2, for your maths lecture. In our previous lecture, हमने पढ़ा था about getting ready. Getting ready means किसी चीज़ के लिए तैयार होना. And in this topic, we learned about counting. हमने counting कैसे करनी है, हमने इसके बारे में सीखा था. और यहाँ पे हम देख सकते हैं we did work on page number 2 and 3. And we also did coloring like this. We did coloring also, and we did counting also, and today also we are going to start counting. First of all, you have to write date, day, and homework. Because today is Monday, you are going to write Monday, and date is 19th, you have to write 19th April 2021. And our today's topic is addition. What is our topic? Addition. Addition means to add. Addition का मतलब होता है जमा करना, किसी चीज़ को जमा करना. Question number 1. Count and add. हमने चीज़ों को गिनना है और उन्हें क्या करना है? ऐड करना है. ऐड करना मतलब जमा करना है. We have to open our page number 5. A. There are numbers are given on this page. 5 plus 2. 5 plus 2. We have to count all these balls. 1, 2, 3, 4, 5. Like it is written over here. 5. And we have to add 3. 1, 2, 3. There are 3 balls and 5 balls. And altogether, how many balls do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, there are 8 balls. Just like this, we have to complete all this exercise. Ask your parents to help you. For next question, use the number line to help you add. Again, we are going to read it. Use the number line to help you add. On this page, you can see they have given us a number line. एक number line हमें दी गई है और नीचे यहाँ पे उन्होंने हमें sums दिए हैं. पहले sum में है 1 plus 7. Again, we are going to read it. 1 plus 7. We are going to add. On the number line, we have to jump on number 1. Here is number 1. From here onwards, we are going to add 7 in it. Let's jump together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Now, we have to count it again. From 1 till 8, we have to count how many numbers we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 plus 7 is equal to 8. Very good. Like this, we have B. We have 3 plus 1. This plus sign is called the addition sign, as we have read it before also, in the previous class also. 3. We have to jump on 3. Here is 3. Now we have to add 1 in it. We have to jump one more time. After 3, let's jump once again. 1. And now all together we are going to count how many numbers are there. 1, 2, 3, 4. Yes, the answer is 4. Like so, you are going to complete this all exercise on your book and ask your parents to help you. Let's move on to question number 3 on page number 6. Add the following. Again, we are going to add, but in this question, they have given us circles, boxes, and diamonds. We have to count it. Over here, it is written 3, and below it is written 4. And there are, how many boxes are here? 1, 2, 3. And 3 is written over here. And how many boxes are below? 4. 1, 2, 3, 4. Yes, there are 3 boxes and 4 boxes. And altogether, एक साथ जब हम इसको count करेंगे, देखते हैं कि ये कितने boxes आते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, the answer is 7. Very good. For this page, you can see
On question number 4, there is again a number line given. We have to use this number line for the above exercise and question number 4 also. हम ऊपर वाली एक्सरसाइज के लिए भी इस नंबर लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. Question number 4. A. 3 plus 2 और 3 plus 2 यानी 3 के अंदर हम 2 को ऐड करेंगे. Here we can see we have to jump on number 3. Then we have to add 2 in it. 1 and 2. Altogether, how many numbers do we have? 1, 2, 3, 4, 5. Yes, the answer is 5. In question number B, here you can see 7 is written. Where is 7? Yes, here is 7. Now we have to jump how many times? 3. 1, 2, 3. And altogether, how many numbers do we have? Yes, very good. 10. Like so, you are going to complete all this exercise. Let's move on to page number 7. This is very interesting exercise. On this new topic, subtraction, you are again going to write your date, homework, and your day also. In addition, we did adding. Addition में हम ऐड करते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को एक साथ जमा करते हैं और उनका नंबर काउंट करते हैं. और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? हम चीज़ों को माइनस करते हैं, चीज़ों को हम कट करते हैं, चीज़ों की मिकदार को हम कम करते हैं. Use the number line to help you subtract. Again, we are going to read it. Use the number line to help you subtract. इस number line के इस्तेमाल से हमने numbers को subtract करना है, cut करना है, कम करना है. A. In number A, what is this? Yes, 7. Where is 7 in the number line? Here. Here is 7. अब हमने jump आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ करना है. 5 minus 2. Here is 7. अब हमने पीछे की तरफ 5 times jump करना है. 1, 2, 3, 4, 5. What is the number over here? 2. So we have written 2. Very good. B. On B, what is the number given here? 8. Here is 8. और हमने क्या माइनस करना है? कितना नंबर माइनस करना है? 4. Very good. Let's jump backwards. 1, 2, 3, 4. What is our answer? 4. Backwards का मतलब होता है पीछे की तरफ जाना. Very good. For question number 2, subtract the following. This is also an interesting exercise. 4 minus 1. 4 is written above and 1 is written below. 4 ऊपर लिखा गया है और 1 नीचे लिखा हुआ है. ऊपर जो नंबर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सर्कल्स बनाने हैं. Like I've drawn over here. 1, 2, 3, 4. कितने सर्कल्स हैं? 4. और हमने कितने माइनस करने हैं? 1. Very good. 4 में से हमने 1 माइनस कर दिया. बाकी हमारे पास कितने सर्कल्स रह गए? Let's count together. 1, 2, 3. How many circles are there? 3. Very good. इसी तरह से हमने बाकी एक्सरसाइज को भी करना है. This is very interesting exercise. Very good. Let's move on to page number 8. Okay, what we have on this page? Do you remember 0? अब आपको कहा जा रहा है क्या आपको 0 याद है? Yes, 1, 2 जब हम लिखते हैं सबसे पहले हम 0 मेंशन करते हैं कि नहीं करते? Yes, 0 का हमें पता है. As you can see on this page, there is a boy. एक लड़का है जिसके हाथ में एक थैला है. जैसा बिल्लू वाली स्टोरी में हमने पढ़ा था कि बिल्लू थैले के अंदर से निकला था. यहाँ पे क्या है? There is a bag in a boy's hand. Amin has 4 soft toys in a bag. आमिन के पास 4 सॉफ्ट टॉयज हैं. कहाँ पर? बैग के अंदर. आमिन हैज़ पुट नो मोर टॉयज इन द बैग. और आमिन ने बैग के अंदर और कोई भी सॉफ्ट टॉयज नहीं रखे. सो वी हैव टू राइट इट लाइक दिस. 4 + 0. क्योंकि बैग के अंदर कितने टॉयज थे पहले?
4. वेरी गुड. और आमिर ने और कितने ऐड किए उसमें? 0. कोई भी नहीं. तो हमारा आंसर क्या हुआ? 4 plus 0 is 4. Very good. आमिन has taken no toys out of the bag. और आमिन ने इस बैग के अंदर से कोई टॉयज बाहर नहीं निकाले. तो हमारा आंसर क्या होगा? बैग में कितने टॉयज थे? 4. और उसने बैग में से कितने टॉयज निकाले? 0. So our answer is 4. Very good. 0 is a special number because when we add 0 to a number, the number stays the same. 0 जो है एक बहुत ही अहम नंबर है, एक बहुत ही अहम डिजिट है. जब हम 0 के अंदर कोई नंबर ऐड करते हैं जैसा 6 + 0, तो हमारा आंसर सेम ही रहता है, ये तब्दील नहीं होता. When we subtract 0 from a number, the number stays the same. इसी तरह से कोई भी नंबर हो उसमें हम 0 जो है उसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर भी वो नंबर वैसे का वैसा ही रहता है. Amin has taken all 4 toys out of the bag. आमिन ने ये चारों टॉयज बैग के अंदर से बाहर निकाले हैं. अब कितने टॉयज बाकी हैं? There are no toys in the bag. क्योंकि बैग के अंदर पहले 4 टॉयज थे और बाद में 4 ही आमिन ने निकाल लिए इस सैक के अंदर से. ये देखें, ये टॉयज निकले हैं इस बैग के अंदर से, इस थैले के अंदर से, और अब इसके अंदर 0 toys हैं. There are no toys in the bag. Very good. Very good class 1. You are learning very nicely. आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही हैं. देखिए हमारे पास है यहाँ पे हमारी मैथ की कॉपी. We have to write first term on it. और ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का काम है. हमने इसी तरह से अपनी कॉपीज़ में किया है. यस, अगर हमने इस तरह से नहीं किया तो अब हम इसको ऐसे ही करेंगे. हमें मार्जिन लाइंस लगानी है, हमें डेट डे मेंशन करना है, हमें होमवर्क लिखना है ऊपर, और लेक्चर भी लिखना है कि लेक्चर 1 का काम है या लेक्चर 2 का काम है. ओवर हियर अब हमने लेक्चर 2 के साथ हमने ये काम किया है जिससे हमारा बुक वर्क था. नाउ दिस इज़ आवर कॉपी वर्क. वी हैव टू रिवाइज द टेबल ऑफ 3. लेट्स रिवाइज टुगेदर. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, and 3 10s are 30. Very good. Like this you have to do your work. You have to draw your margin lines and make sure your work is neat and clean. Again, ask your parents to help you. अपने वालिदैन की मदद लें. खुश रहें, safe रहें. Stay in your homes, be protected. See you all with the next video. Allah Hafiz.